Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorial. So in this particular video, I'm going to discuss about internship in IIT. Basically, I'm talking about summer internship in IIT. So there is a notification from IIT Ropar that it launches a summer research internship in IIT Ropar. So those students who are basically who are studying in their BSc, who are enrolled in MSc or even BTech students are also eligible. So in this particular internship, the internship will be in totally in virtual mode. There will be no offline internship, but you have opportunity in other IITs. Like I had already made some videos. Like if you just check my videos, you can see IIT Gandhinagar had launched the offline mode internship. Even IIT Madras, IIT Palakkad had also launched. It is also in offline mode. So if you want to pursue that, you can either go through my video and see that how you can apply, what are the things they required, and even even that in IIT Gandhinagar and IIT Madras they provide stipend also, and in IIT Palakkad also they provide stipend. So you need to check those all videos. I'll give the link in description. Not talking about particular this internship in IIT Ropar, physics students, chemistry students, even maths, biology, all students are eligible. So if you and I would like to tell you one thing that don't think कि मेरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या मैं प्राइवेट कॉलेज से या मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है मुझे नहीं मिलेगा. डोंट थिंक लाइक दिस. क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ लाइक in IIT Madras, when IIT Madras launched summer internship, it is mentioned in notice that they will not recruit IITs, those students who are studying in IIT, so they will not recruit IITs students जो आईटी में पढ़ रहे हैं उनको बेसिकली वो नहीं लेंगे. इट मीन्स दैट कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या लाइक आपका कॉलेजेस नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़े, सो दे आर उनको वो चाहते हैं कि वो भी एक सीखें. तो इसमें आपको आपको जब इस तरीके के इंटर्नशिप में जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स करते हैं उनके अंडर आपको रह के काम करना पड़ेगा. वो आपको काम सिखाते हैं. साथ ही साथ इवन जैसे लैब में आपको काम करना पड़ेगा. साथ ही साथ कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो सिलेक्शन होता है वो एक बेसिस पे होता है. यहाँ पे जो जजमेंट होता है वो एक बेसिस पे किया जाता है. दैट इज एसओपी, विच मीन्स which means that statement of purpose. You need to write the statement of purpose. Now if I talk about state what is statement of purpose, it is nothing but if you have interest in some topic, you need to elaborate. You need to first go through the like if I talk about IIT Udubar, you have to go through the, suppose you are applying for a chemist, you are a chemistry student, so you go through first which professors are taking students for internship, then go through that in which field they are, बेसिकली वो कौन से फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं. फिर आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस में, अगर आपका उनके साथ मैच होता है तो आप देखो उनके रिसर्च पेपर को थोड़ा एनालिसिस करो. नाउ एसओपी में आपको सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है. आपने इससे पहले कहीं प्रोजेक्ट या कोई इंटर्नशिप की उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दो. नाउ मेन कंटेंट जो होता है वो आप बताओगे कि जो फील्ड में सर काम कर रहे हैं या मैम काम कर रही हैं, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो उनका आप रिसर्च पेपर पढ़ो, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो मैम मैं यहाँ मैम या सर मुझे इस फील्ड में समझ आप जो काम कर रही हो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चेंज कर सकता हूँ, ऐसा वैसा जो भी आपके दिमाग में थोड़ा इवन अलग कुछ आइडिया आता है उस चीज़ को आप मेंशन करो. So that will differentiate from other students. So you have a greater chance for selection. So these are the process. Now I'll talk about the how you can apply. Okay, let me just open it. So you need to search summer internship application form in just summer internship in IIT Ropar. Now you will get the page like this, summer internship application form, which is basically it start from 23 May to 18 July. Now click here to apply for summer internship. You will get a advertisement. So here things are mentioned. Application are invited for summer internship for 5 to 8 weeks commencing from 23 May to 18 July 22. There will be no fellowship here. Internship will be in virtual mode. The students are required to apply online from
which is like here IITs and IITs, ICER, national labs, central funded institution lab, government universities, private institution university. तो these are the, अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेजेस में पढ़ते हो सो यू आर एलिजिबल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिपार्टमेंट्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो, केमिस्ट्री में देख लो 4 है, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स का देख सकते हो, फिजिक्स में 6 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेगा, मैथमेटिक्स 8 स्टूडेंट. प्लीज डोंट गो थ्रू कि यार इतना कम स्टूडेंट्स को ले रहा है, बिकॉज हियर इट इज ऑल्सो मेंशन दैट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द फोर्थ नंबर पॉइंट, द सीट्स में बी इंक्रीज और डिक्रीज. सो आप ये मत सोचो कि बहुत कम सीट है तो नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट. ऑलराइट. नाउ if I talk about the last date is 15 April. All right. Now the details of the supervisor under whom the candidate want to do internship can be seen from the, you have to go through the institute website and check all the professors who are taking students. And second point is saying that the candidates must select supervisor in the relevant field. If you have an interest in certain field, so you need to choose that faculty. All right. Now they have an option in online form to give names of 3 potential supervisor. All right. So if you just think that, if you are confused that some like if you have an interest in organic chemistry, and in IIT Ropar, suppose five professors are working in organic section. All right. So you have a option to select 3 of the professor. All right. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ से आपको फिर वापस से आपको यहाँ पे आ जाना है. नाउ क्लिक हियर फॉर अप्लाई इंटर्न समर इंटर्नशिप. ऑल राइट. यहीं से आप इसको बैक कर सकते हो. यहाँ पे आपको क्या करना है, like here how to apply, you have to create new account and mail will come, and further process will be easy, you can easily put. One important thing is that I had tell about the statement of purpose, you need to fill all that. Now they will ask about your academic details and other personal details. It will be very easy process, that's why I didn't tell about. So you can just check this out and fill it out. All the best, and yeah, all the best. Thank you so much.